Now students, now we'll take the second question of exercise 8.2. Now I have drawn the figure. I'm not writing the question. I'll just read the question what is given in the problem. A, B, C, D is a, now this is given A, B, C, D is a rhombus. Now this is given, and P, Q, R and S are the mid points of AB, BC, CD and DA. Now show that so after joining these midpoints, so whatever the figure I am getting in the middle, show that PQRS is a rhombus. Sorry, it's a rectangle. Now this has to be proved. It's a rectangle, right? Now this is a question. Now A, B, C, D is a rhombus. So rhombus means all the sides are equal and their diagonals, they make an angle of 90 degrees and they are not equal. I'll join this. I'll make one more diagonal. That means they will make an angle of 90 degrees here. I'll mark this as say M. Okay? Clear? So this is the question. Now I have to show that the inner figure, that is PQRS is a rectangle. I have to show this is a rectangle. Now what I'll do is, see, the first thing is, now I have to show that, now in the first question, whenever you get this type of question, the first target is show that this PQR, the inner one, it's a parallelogram. Okay? So I'll use the midpoint theorem. First I'll take this triangle. In triangle A, B, C. In triangle ABC, this triangle. In triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC. So apply BPT, that is apply midpoint theorem. So BPT we will be doing in 10th class. So apply midpoint theorem. So that means this will be PQ is parallel to AC and PQ will be half of AC. Actually this is the midpoint theorem. If these two are the midpoints, that means this line is parallel to this and it is half of this. So similarly, see, there is no need to write down again. Similarly in triangle ACD, in this also these two are the midpoints. That means apply midpoint theorem. So these two will be parallel. So similarly I'll get here SR will be parallel to AC and SR will be half of AC. I'll mark this as 1, I'll mark this as 2. Clear? So I have taken two triangles. In both the triangles I have applied midpoint theorem. So from 1 and 2, what I'll get? From 1 and 2. See, this line is parallel to this, this line is parallel to this line is parallel to this. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो opposite वाले है ये भी they are parallel. That is PSR is parallel to PQ. एक पेयर पैरेलल आपने शो कर दिया. This implies PQRS is a parallelogram. हमारा काम हो गया. ठीक है, it is a parallelogram. क्लियर? हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया. अब देखिए, now see, here I have drawn two triangles. Now diagonals, because this A, B, C, D is a rhombus, so in a rhombus the diagonals they make an angle of 90 degrees. This is a 90 degrees. So I'll mark this as, say, I'll keep this as T and I'll take this as, say, Q. T, I'll mark this as Q. ठीक? Now see, AC, since AC is parallel to PQ, देखो ये AC जो है इस PQ के पैरेलल है. इसका मतलब ये हो गया, that means TM is also parallel to PQ. मतलब ये दोनों लाइनें, इट्स ए पार्ट ऑफ द लाइन, दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल. तो इसका मतलब ये हो गया PQMT इज ए पैरेललोग्राम बन गया.
समझ गए। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है जो कि हमने अभी प्रूव किया, ये दोनों लाइनें पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये पार्ट ऑफ द लाइन दिस इज आल्सो पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो ये बीच वाला जो ये जो बॉक्स बन रहा है दिस इज ए पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब सिंस एंगल एम इज 90, इसका मतलब हो गया एंगल पी इज ऑल्सो 90, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स आर, ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी, आई जस्ट ड्रॉ ए लाइन हियर सो दैट एवरीथिंग विल बी विजिबल, क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब हो गया ये अगर ये 90 है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 90, ठीक है। तो यहाँ पर सो सिमिलरली ये 90 हो गया, इसी तरह सिमिलरली नाउ देयर इज नो नीड टू प्रूव। Similarly, angle Q is also 90, this one, and angle R is also 90 degrees, and angle S is also 90 degrees। देखिए तो ये मतलब ये ईच 90 डिग्रीज हो गया एंड ऑपोजिट साइड, जो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज PQRS इज ए रेक्टेंगल। बस हो गया, मैंने 90 डिग्रीज प्रूव कर दिया, 90 डिग्रीज प्रूव कर दिया, तो मतलब ये दिस आर ऑल 90 डिग्रीज मैंने प्रूव कर दिया। तो मतलब ये जो फिगर बीच की बन रही है इट्स ए रेक्टेंगल, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्रीज, बाकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है लेकिन इतनी टफ नहीं है, आपको इसके बेसिक्स समझने हैं, तो बड़े ध्यान से देख के 2-2 बार प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। थैंक यू।